Hello everyone, morning. Online guys, can you hear me? Can you see my screen? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, today what we will do, we will try to do a simple project on data cleaning. Okay, Excel को यूज करके हम लोग डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, एज ए डेटा एनालिस्ट हमारा काम क्या होता है? पहले जो रॉ डेटा आता है वी नीड टू क्लीन दैट. ओके, एनालाइज करने के लिए वी नीड टू डू द क्लीनिंग. विदाउट क्लीनिंग वी विल नॉट बी एबल टू डू द एनालिसिस. ठीक है, तो एक्सेल में इफ यू आर वर्किंग एज ए एक्सेल डेटा एनालिस्ट, so you will have two responsibilities. One will be data cleaning, उसके बाद डेटा एनालिसिस. ओके, if you are working as a data analyst for Power BI, यहां पे भी यही दो काम होते हैं. ठीक है, whatever tool you are working as a data analyst, your work will be, means actual work will be two things. One is data cleaning और second one data analysis. जो raw data आता है, जो transactional data आता है, that will never be in a cleaned format. ओके, वो inconsistent data होता है, उसको clean करना पड़ते हैं, उसके बाद we will do the analysis. But when you are working as a Power BI developer, no, ये जो data cleaning का part है, there will be somebody else called data engineer. He will do it. ओके, क्योंकि वहां पे इट विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स. सो दिस गाय विल डू द डेटा क्लीनिंग एंड देन ही विल हैंड ओवर द डेटा टू द डेटा एनालिस्ट. ओके, बट एज ए एक्सेल डेटा एनालिस्ट यू नीड टू डू बोथ द थिंग्स. यहाँ पे कोई डेटा इंजीनियर नहीं होगा जो आपको डेटा क्लीन करके देने वाला. ठीक है, फॉलोइंग गाइस ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right. sir. So we are learning Excel, so let's try to do some data cleaning work here. Okay, मेरे पास, I will share these things with you also. For example, this is one data I have. Okay, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, it looks like this. It is not in proper format. Okay, इसको मैं थोड़ा zoom out कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज हाउ द डेटा. यहाँ पे मुझे रेवेन्यू कितना है नहीं दिख रहा है, डेट नहीं दिख रहा है, क्लाइंट का नेम पूरा नहीं दिख रहा है. ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम भी थोड़ा स्पेस ऊपर नीचे है. ओके, हियर ऑल्सो इफ यू सी रीजन टेक्सास है, कंपनी क्लाउड टेक है, दोनों मिला के एक ही कॉलम पे है. ओके, लाइक दिस सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी मे हैव टू क्लीन. यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है, राइट. रो हाइट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, सो इट इज नॉट इन द क्लीन्ड फॉर्मेट. Yes or no? Right, this is not in the clean format. इसको लेके मैं अगर एनालाइज करना चाहूंगा, it will be difficult. I will not be able to do the analysis. तो पहले हमें क्या करना है? I need to clean this entire sheet. ठीक है, तो what I will do, first I will take a copy of this one. जो ओरिजिनल डेटा है, रॉ डेटा, I will keep it as it is and I will take a copy of the same sheet. मैं क्या करूंगा यहाँ पे, I will do a right click. पेज नीचे sheet 1 है ना, वहां पे राइट क्लिक करके आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड मूव और कॉपी. ठीक है, तो व्हेन आई क्लिक ऑन मूव और कॉपी, इट विल आस्क मी आपको इसका एक कॉपी बनाना है और कहाँ पे प्लेस करना है. तो मुझे इसका एक कॉपी करना है, सो आई विल से क्रिएट ए कॉपी और उस कॉपी को एंड पे रखना है. यहाँ पे एक ही शीट है तो ऑब्वियसली यहीं पे आएगा. अगर मल्टीपल शीट्स होते हैं, व्हेन आई से मूव टू द एंड, लास्ट शीट जो आएगा दैट विल बी योर कॉपीड शीट. Okay, so this is, for example, I will do a right click and say raw data, and this one I will rename it as cleaned data. इसका मतलब क्या है, ये हमारा रॉ डेटा आ रहा है. नाउ इसको हम कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं, क्लीन्ड डेटा में आके इसको हम क्लीन करने वाले हैं. मतलब वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द रॉ डेटा. जो रॉ डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका एक कॉपी लेके देन वी आर ट्राइंग टू डू द क्लीनिंग. क्यों कर रहे हैं? अगर हम कुछ गलत करते हैं, स्टिल आई हैव द ओरिजिनल डेटा इन प्लेस.
ओरिजिनल डेटा को कुछ नहीं होगा, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. गाइस ऑनलाइन फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क मी. इफ यू फील आई एम लिटिल फास्ट आल्सो, यू प्लीज लेट मी नो. ठीक है? सर और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वी गॉट द रॉ डेटा. हमको दिस फॉर्मेट में वी गॉट द डेटा. ओके, इसमें क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी द डेट्स प्रॉपरली. ओके, क्लाइंट नेम में भी यहाँ पे कुछ समथिंग एक्स्ट्रा इज देयर विच इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम में भी आई हैव सम एक्स्ट्रा स्पेसेस. यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स है. ओके, इट इज नॉट एन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, राइट? यहाँ पे भी ओके डिपार्टमेंट, इफ यू सी हियर, आई हैव द कंपनी नेम एंड रीजन नेम इन द सेम कॉलम. Okay, I may have to clean it. I may have to put it in different columns. ऐसे सर। बहुत सारे cleaning activities which is required in this sheet. This is not a cleaned data sheet. This is a raw data. यस सर। Okay. So what we या are trying to do now, I have taken a copy of that sheet. कुछ नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट किया है, मतलब राइट क्लिक करके क्रिएट ए कॉपी किया है. ओके, ये जो रॉ डेटा है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने दो. ओके, जो भी हम क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इट इन द दिस शीट, सो दैट रॉ डेटा को मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. अगर यहाँ में हम गलती से कुछ डिलीट कर दिए, कुछ भी कर दिए, स्टिल वी हैव ए कॉपी ऑफ दैट वन. मतलब हमने क्या किया, बैकअप रख के रखा है. ओके, राइट. या राइट, नाउ लेट्स कम टू क्लीन द डेटा एंड लेट्स ट्राई टू डू सम क्लीनिंग. फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस डेटा जो है इसको एक टेबल फॉर्मेट में वी कैन चेंज इट. Okay, now this is not in a table format. So for that what I will do, I will click somewhere in the data. कहीं पे भी data के अंदर you can select. You can do Control T, shortcut है. Okay, Control T, या फिर what else you can do? You can go to Home tab and here you have something called Format. Okay, Home tab में Format में जाके, no, not Format as table, sorry. Format as table में जाके you can select any one format. For example, I will select this black one. जैसे ही सिलेक्ट करता हूं, ये क्या हो रहा है, एंटायर जहां तक हमारा डेटा है, इट इज टेकिंग एवरीथिंग. रेफरेंस क्या ले रहा है, जहां तक हमारा डेटा है, इट इज टेकिंग द एंटायर थिंग, B2 से लेके I33 तक. B2 मतलब क्या है, दिस वन, राइट? I33 मतलब क्या है, दिस इज द आई कॉलम, दिस इज द रो, दिस वन. तो क्या कर रहा है, एंटायर टेबल इट इज सेलेक्टेड, राइट? एंड देन इट इज आस्किंग माई टेबल एज हेडर्स. आपका टेबल जो सेलेक्टेड है इसका हेडर्स है या नहीं है, मतलब कॉलम नेम्स है कि नहीं है. डू वी हैव द कॉलम नेम्स? वी हैव द कॉलम नेम्स, राइट? सो वी नीड टू चेक दिस. अगर ये अनचेक होता है, देन यू नीड टू चेक दिस वन. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक टेबल फॉर्मेट हो जाएगा. टेबल क्यों होता है, क्यों बनाने की जरूरत है? टेबल बनाने, या मनी तो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू ए टेबल, व्हाट विल हैपन, अगर कल सुबह कोई नया डेटा इसके अंदर आता है, ओके, एक नया रो, इफ आई ऐड इट हियर, इंसर्ट करता हूं, स्टिल दैट विल बी इनसाइड द टेबल ओनली. स्टिल ये टेबल के अंदर ही है. कुछ नया रोज इंसर्ट होते हैं इन बिटवीन, स्टिल इट विल टेक द एंटायर रेफरेंस. इफ यू डोंट कन्वर्ट इनटू ए टेबल, अगर आप टेबल जैसे कन्वर्ट नहीं करोगे एंड देन इंसर्ट, ये क्या होगा, ये लास्ट रो को कंसिडर नहीं करेगा. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ए टेबल. ठीक है, क्लियर? टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेलेक्ट समवेयर इन द डेटा, गो टू होम, फॉर्मेट एज टेबल. इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. सर, मैं टेबल फॉर्मेट करना जरूरी है क्या? हाँ, अभी बताया ना, जरूरी मतलब सी, अगर बीच में अगर आप कोई इंसर्शन कर रहे हो, डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, जी। अगर टेबल फॉर्मेट में है, ये वाला एंटायर टेबल इट विल पिक, क्योंकि ये रो नीचे आ रहा है ना. अगर बीच में आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, ये 33 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, राइट? यस सर।
अगर आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो देन इट विल टेक दिस वन ऑल्सो इन योर रेंज। अगर टेबल फॉर्मेट में नहीं करते हो तो वो 33 तक ही लेगा। यस सर। Okay, that is the reason why I am asking you to convert into a table. But it is not mandatory, it depends आपका situation के हिसाब से। Okay? So once I converted this into a table, then what I want to do, मुझे ये जो रो हाइट है, यहाँ पे रो हाइट ज्यादा है, यहाँ पे रो हाइट कम है। रो और कॉलम के बीच में डिफरेंस पता है, राइट? These are called rows, right? These are called columns. Vertical ones are called columns, right? Horizontal ones are called rows. ठीक है? तो मैं क्या करूंगा अभी, आई कैन सी कि कॉलम विड्थ जो है वो इट इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड, रो हाइट भी इट इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड, राइट? सो आई हैव एन ऑप्शन. व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट समवेयर इन द टेबल, आई विल गो टू द होम and I have an option here called find, no, not this one, format. Okay, मैंने क्या किया, सिर्फ कहीं ना कहीं डेटा के अंदर यू नीड टू सेलेक्ट, गो टू होम एंड यू सेलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में यू सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ऑटो फिट रो हाइट. आपका टेबल में जितना भी रोस हो, इट कैन बी 50,000 60,000, जितना भी रोस हो, व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू ए टेबल एंड क्लिक ऑन ऑटो फिट हाइट, ये क्या हो जाएगा, इट विल टेक द, व्हाई इट इज नॉट टेकिंग हियर, ओके लेट अस सी. ये क्या करेगा, जनरली इट विल टेक द रो हाइट का, लेट मी डू इट अगेन. ओके, इट वाज लाइक दिस, राइट? हाँ, कहीं भी आप सेलेक्ट करो, गो टू होम, go to format, auto fit row height. So automatically based on the data available inside each row, it will take the height. Okay, I need to select the entire table. Okay, so select here, click on Control A. Control A मतलब क्या है, entire data, उस टेबल में जितना भी डेटा हो, 10 रोज है या 60,000 रोज हो, जो भी है, it will take the entire data. And then go to home, go to format and say auto fit row height. तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जितना भी डेटा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इट विल टेक द हाइट ऑफ द रो. ओके, सिमिलरली अगेन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेलेक्ट द एंटायर टेबल. कैसे करेंगे, कंट्रोल ए. कंट्रोल ए मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल. ठीक है, एंड देन व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल गो टू होम, वी विल गो टू फॉर्मेट, दिस टाइम व्हाट वी विल डू, ऑटो फिट कॉलम विड्थ. रो हो गया हमारा, अभी क्या करना है, कॉलम को फिट करना है बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल. तो व्हेन आई से ऑटो फिट कॉलम विड्थ, व्हाट इट विल हैपन, हमारा डेटा के हिसाब से कॉलम आल्सो इट विल टेक ऑटोमेटिकली द विड्थ साइज. ओके, राइट. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. पहला रो, पहला कॉलम क्या है हमारा, डेट कॉलम है. ओके, सो ये ठीक है, दिस में आई डोंट थिंक एनी क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट, अगर आपको डेट का फॉर्मेटिंग चेंज करना है, व्हाट यू विल डू, पहले दिस एंटायर डेटा को सिलेक्ट करना है. ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पे तो वी हैव लेस नंबर ऑफ कॉलम्स, लेस नंबर ऑफ रोज, सो इफ यू डू लाइक दिस दैट इज फाइन. बट अगर आपके पास 50,000 रोज होते हैं, देन वी कैन नॉट कीप ऑन स्क्रोलिंग डाउन, नो. हाँ, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट सेल जहां पे हमारा डेटा है, गो टू दैट वन, देन डू कंट्रोल, कंट्रोल डाउन करने से क्या होगा, इट विल गो टू द लास्ट सेल. बट हमें सेलेक्ट करना है ना, ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है. हाँ, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट रो में जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. ओके, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने से क्या होगा, आपका पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक एवरी रो इट विल बी सिलेक्टेड. इफ यू डू कंट्रोल डाउन, इट विल ओनली डाउन या अप करोगे, सिर्फ इट विल टेक टू द लास्ट रो. अगर नीचे हो तो पूरा ऊपर तक लेके जाएगा, अगर ऊपर हो पूरा नीचे तक लेके आएगा. अगर ओनली शिफ्ट डाउन करोगे तो वन वन सेल विल बी सिलेक्टेड. ओके, एक एक सेल सिलेक्ट होगा. बट हमें क्या करना है, एंटायर कॉलम के जितने भी वैल्यूज है सबको सिलेक्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो. ओके, सो दीज सेल्स हैज बीन सिलेक्टेड. इसी सेल्स के अंदर जो भी है हमको फॉर्मेट चेंज करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू राइट क्लिक, कहीं पे भी क्लिक करके यू डू ए राइट क्लिक
and then click on format cells. ओके, फॉर्मेट सेल में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट, ये हमारा डेट कॉलम है, सो वी आर इन द डेट, विच फॉर्मेट यू वांट टू चेंज, आपका मार्च जो है आपको लिखना है मार्च, या फिर हाउ यू वांट टू शो. ओके, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स. डेट, मंथ, ईयर, मंथ 03 ले रहा है, यहाँ पे 03 ले रहा है, यहाँ पे 03 ले, आपको कौन से फॉर्मेट में डेट को चेंज करना है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन सेलेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेंज इट एज दिस वन, मतलब डेट पहले आएगा, उसके बाद मंथ का नाम आएगा, उसके बाद ईयर आएगा. ओके, सो आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन ओके. सो व्हाट विल हैपन, माय एंटायर डेटा विल बी चेंज एज पर द फॉर्मेट विच आई हैव सेलेक्टेड. ओके, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्लाइंट का नाम है, जैसे ये अमेजॉन है या टेस्ला है, नेटफ्लिक्स है, लाइक दिस वी हैव. ओके, सो एवरीथिंग इज इन कैपिटल लेटर. जनरली दिस नेम शुड बी इन लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स होना चाहिए. ओके, सो उससे पहले इफ यू सी, हर एक कंपनी के एंड में यू हैव ए ब्रैकेट, इन दैट सम वैल्यू इज देयर, राइट, सम वैल्यू इज देयर विच डजंट हैव एनी मीनिंग, ये कुछ कोड जैसा है, राइट. एंड इट इज नॉट द सेम थिंग इन एवरीवेयर, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो इज नॉट सेम, यहाँ पे 8 + 1 9 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है. ओके, ऑल इट इज वेरिंग. मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ मुझको निकालना है. वो इट कैन बी सिंगल कैरेक्टर, इट कैन बी 10 कैरेक्टर्स, जो भी है ब्रैकेट के अंदर, आई डोंट नीड दैट वन, राइट. So what again I will do, I will go to my first cell, I need to select the entire row. So what we will do, कंट्रोल शिफ्ट डाउन. control shift and down. डाउन. Okay, अभी मैं क्या करूंगा, I need to replace, इसको मुझे रिप्लेस करना है एम्प्टी वैल्यू से, मतलब स्पेस के साथ. So how to replace, what is the shortcut, find कंट्रोल and प्लस replace. Find and replace क्या होगा, control H. ओके, इफ यू डू ओनली कंट्रोल F करोगे, F मतलब फाइंड, तो आप किसी को ढूंढना है, यू कैन डू दैट. फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप हियर नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन लिखते हैं, एंड क्लिक ऑन फाइंड, तो इट विल टेक मी टू दैट प्लेस. मतलब सिर्फ फाइंड कर रहा हूं मैं, मुझे उसको रिप्लेस करना है, मतलब ये नेक्स्ट टैब है ना, यहाँ पे आना है. किसके साथ रिप्लेस करना है, दैट यू कैन मेंशन इट हियर. ओके, शॉर्टकट फॉर दिस वन इज कंट्रोल H. ओके, तो हमें क्या करना है, यहां से किसको फाइंड करना है, ब्रैकेट को फाइंड करना है. ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, वी डोंट नो, हर एक रो में अलग अलग वैल्यू है. सो इफ आई पुट इनसाइड ब्रैकेट ए एस्ट्रिक, ये जो स्टार सिंबल है, इफ आई पुट दैट वन, दैट मीन्स व्हाट, जो भी ब्रैकेट के अंदर है एवरीथिंग विल बी रिमूव, एवरीथिंग इज सेलेक्टेड. अभी तक हमने रिमूव नहीं किया है. हम फाइंड में क्या कर रहे हैं, ये जितने सेल सेलेक्टेड है उसमें से वेयर डू वी हैव ब्रैकेट्स, और स्टार मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो उसको फाइंड करना है. फाइंड करके क्या करना है, किससे रिप्लेस करना है, एक एम्प्टी स्पेस के साथ रिप्लेस करना है. आई एम जस्ट गिविंग ए एम्प्टी स्पेस एंड देन आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. तो क्या हुआ, 31 रिप्लेसमेंट्स हैपन, क्योंकि वी हैव 31 रोज यहाँ पे. तो इफ यू सी हियर क्लोज, मेरा जो भी था ब्रैकेट के अंदर, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द सेल्स, राइट. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट, लेट मी शो यू अगेन. क्या किया मैंने, फर्स्ट सेलेक्ट ऑल द सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, उसके बाद कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस. उसके बाद क्या फाइंड करना है, ब्रैकेट को फाइंड करना है, क्या हटाना है, जो भी है ब्रैकेट के अंदर. सो आई विल पुट स्टार इनसाइड ब्रैकेट. रिप्लेस में क्या करेंगे, स्पेस, एक स्पेस देंगे एंड देन क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. हाँ, कंट्रोल H फॉर हरियाणा. ओके, राइट. उसके बाद नाउ आई वांट टू चेंज दिस वन इनटू ए लोअर केस. ओके, ये सब
कैपिटल्स में है, राइट, अपर केस में है, मुझे ये सारे को लोअर केस में चेंज करना है। कैसे करेंगे? Lower function we can use there. सॉरी, Lower function we can use there, sir. हाँ, कहाँ पे डालेंगे? वेयर वी शुड कीप? First select all, sir. हम्म Control shift down. हम्म तो No, we can't. We हाँ, can't use. ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंसर्ट ए कॉलम। बीच में आपको एक इंसर्ट कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड इंसर्ट। ओके, Oh, राइट क्लिक करके व्हेन आई डू एन इंसर्ट एक एम्प्टी कॉलम आ जाएगा मेरे पास। ओके, यहाँ पे आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। yes, ओके, sir. so what formula we are going to apply? Lower. So how to apply? Is equal to lower. Lower, then All this one. the yes. Now when I click on this one, what will happen? See, generally when you do in Excel, no, आप जो सेल पे अप्लाई करते हो सिर्फ सिर्फ उसी सेल में चेंजेस होते हैं, राइट? बट Yes, नाउ sir. व्हेन आई क्लिक ऑन एंटर, यू सी एंटायर सेल पूरा जितने नीचे भी थे, एवरीथिंग गॉट अप्लाइड। हाउ? क्यों? Because you are selecting format option, sir. क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको टेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, अगर टेबल में नहीं होता, यू नीड टू पुट इट एवरी सेल, या फिर ड्रैग करना पड़ता, नहीं तो हर एक जगह जाके आपको करना पड़ता। सो टेबल में कन्वर्ट करने का दिस इज वन ऑफ द फीचर। इफ यू अप्लाई ऑन द टॉप सेल, इट विल ऑटोमेटिकली टेक टिल द बॉटम। ओके, राइट। नाउ ये आ गया हमारा जैसे चाहिए था। नाउ डू वी नीड दिस वन? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम नेम को आई विल चेंज इट इनटू क्लाइंट। ओके, डू वी नीड दिस वन? We don't need. So if I delete this one, what will happen? ये वाला भी जाएगा। क्यों? हाँ, first let's try to understand the wrong thing, then we will do the right thing. ठीक है, तो why यहाँ पे why we are getting the error? हाँ, so basically the column which this column is created based on that one. ओके, दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंड होके इस कॉलम को हमने बनाया था। अगर उसी को हटा देंगे देन ऑब्वियसली दिस विल आल्सो गो। Yes, sir. तो व्हाट वी नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, जो जहां पे आपने फॉर्मूला डाला है, ठीक है, जो करेक्ट है, सेलेक्ट ऑल द थिंग्स देयर। ओके, सेम कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी। ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू इन द सेम प्लेस, वहीं पे आपको पेस्ट करना है। बट हाउ यू विल पेस्ट? You will come here, paste option है ना होम में, यहाँ पे I have something called values। तो values करने से क्या होगा? Let me do it again। values करने से क्या होगा? अभी यहाँ पे क्या है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है। ओके, तो it depends on the formula, this will change। बट जब मैं इसको कॉपी करके when I paste only values, अभी क्या हुआ, सेम चीज ही पेस्ट हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, बट इसके पीछे कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, राइट? इसके पीछे अभी कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब क्या है? नाउ दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस वन, Yes, sir. राइट? सो नाउ इफ आई डिलीट दिस वन, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल, एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये वाला उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। हमने कॉपी किया और जब पेस्ट किया ओनली वैल्यूज को पेस्ट किया, मतलब क्या, पीछे जो फॉर्मूला था उसको हमने हटा दिया, राइट? गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. राइट। नाउ सेम सिमिलरली टेल मी दिस थिंग, यहाँ पे मेरा क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम है, जो कि इट इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे लोअर है। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू सी, इससे पहले वी हैव सम एम्प्टी स्पेस भी है। ओके, तो ऑल दो थिंग्स आई वांट टू रिमूव। यहाँ पे भी देखो स्पेस है, दिस इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, वी वांट टू चेंज दिस इनटू ए प्रॉपर फॉर्मेट। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप व्हाट, इसको हमने कैसे किए थे? हम्म
column. First add a new column, insert a new column. Right? पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, वहां पे सब चेंजेस करेंगे, फिर वी विल कॉपी एंड डू द थिंग्स एंड ऑल. राइट नाउ यहाँ पे क्या फॉर्मूला डालेंगे? हाँ, तो ठीक है, पहले क्या करेंगे? इक्वल्स ट्रिम, देन सेलेक्ट D3. ओके, ऑलवेज बी वोकल. ठीक है, आप इफ somebody इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो, उस टाइम में आप जिसको समझा रहे हो, ही विल नॉट बी इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल बी सिटिंग समवेयर एल्स. आपका हमेशा ऑनलाइन मीटिंग में होगा, so you need to be verbal. Okay, you need to tell D3, cell number D3, या फिर contact the first name under contact. Okay, verbally आपको समझाना पड़ेगा. ठीक है, राइट. सो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन ये किया, क्लोज द ब्रैकेट. सो अभी क्या हुआ? ट्रिम हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर. सिर्फ स्पेसेस को हमने हटाया. ट्रिम फंक्शन का काम क्या है? जो भी अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं, इट विल रिमूव ऑल दोस थिंग्स. सो इट हैज रिमूव्ड नाउ, बट स्टिल वी नीड टू डू सम मोर क्लीनिंग. और क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो कैसे करेंगे? हाँ, नो नो, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग. हाँ, कोठी, हाउ, वेयर. हाँ, नो, दैट इज नॉट राइट. नो, will apply proper functions. हाँ, एक सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल हमें मतलब एक ही कॉलम में यू हैव टू डू मल्टीपल चेंजेस. 10 different changes you need to do. We cannot add 10 different columns. Right? In the same column we need to do. Simple, no, nothing different. यहाँ पे हमने हाँ ट्रिम. हाँ, सो नाउ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तक ट्रिम हो गया, राइट? तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर डालूंगा. So I am using two different functions in the same place. तो पहले क्या होगा? पहले ट्रिम करेगा, ट्रिम करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर यूज होगा. राइट? तो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर केस. आप प्रॉपर की जगह अपर लोअर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज. राइट? तो इसका मतलब क्या आ रहा है? एक ही सेल में आई एम यूजिंग मल्टीपल थिंग्स. राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू? These two columns are there. We don't need two columns. So copy केमती करूया? Control shift Down. down arrow, then Control C, then where to paste? Where to paste? Where to paste? You need to tell me the cell number. E3. Okay, go to E3 and now paste values. Okay, then we can delete this one and I can rename this one as contact. Proper. Trim pore mane Okay, let us do it again. Kota. सेम सेल रही प्रॉपर. नहीं नहीं, फॉर्मूला बार है, जहां भी करियो फॉर्मूला बार रही करियो. ओके, लेट मी डू इट अगेन. Okay, we have added a cell, sorry, column. We have added a column. Now what we will do? Equals formula जहां भी start करियो ता पूरा में equals होगा, right? Everybody understands Odia or Yeah. Sir. Yes, sir. Yes, sir. all? Any issue please let me know. ठीक है, तो मैं कौन कर जेटी equals दिला परे I am giving a formula called trim. Okay,
trim formula which cell re apply koriar achi D3 re, right? So I am selecting D3 and close it. So till now what will happen? It will only do the trim. Now what we need to do? Trim upare हमको proper case use kariar achi, right? एका कथा ना एठी फॉर एग्जांपल तमे एठी करे एठी केमति करियो यू नीड टू कम टू फॉर्मूला बार ने एठी लिखिया कोन अछि लास्ट टेबल कमेंट था पर से सॉरी एबे को कोन करिया मोस्टली कंफ्यूज होचे आपण E3 रे से फॉर्मूला कोड करथिले ना हां एटा E3 एका ए फॉर्मूला बार एटा एटा हां एटा E3 एका ना इफ यू सी हियर एठी कोन अछि E3 एका राइट तो हमें इफ यू सेलेक्ट एनी सेल again you need to come to formula bar only you need to apply right formula हमें कोठी apply कर परिया only in the formula bar right हमें को cell select करछु that will come up here right proper okay this is done so next what we need to do copy this go here paste only values and then we can delete this one you can change the right this is done now next department so if you see here what are we everywhere we are having two things one is name of the company another one is region right या फिर maybe department okay department and region okay two things are here cloud tech is the department texas is the region strategy is the department new york is the region okay everywhere it is like that only right so what we need to do we need to split this into two okay gote ame kariya department out a column banaya region right so what we need to do we need to split so select everything all the data control shift down arrow then go to home go to data okay go to data data array we have something called text to columns text to columns mane kono it will split into columns okay so when I click on text to column hame ko to split kariya where we need to split underscore yeah underscore wherever there is underscore from there I want to split underscore पूर्वटा गोटे कॉलम रे आसिया दरकार underscore परटा आउटे कॉलम रे आसिया दरकार right Yes, sir. select everything go to text to columns the first option is delimiter okay delimiter mane kono based on what you want to split based on what value you want to split so here our delimiter is what okay delimiter next our delimiter kon it is tab no semicolon no comma no space no other so what is that other here you need to specify that other that is underscore okay कोठो हमको split करियर अछि that value you need to put it here clear so it will Yes. show you the preview केमिति split हम गोटे preview देखेबो okay so if that is correct just click on next and then finish okay एटा का कोन कहूची there is already data there do you want to replace it तमाने कोन कहूची ए टेक्स्ट आस्की ट्रांसफर ऊपरे ओवरलैप हे जिवो right तमाने कोन the payment column is getting overlapped with the region one we will lose this Yeah. data payment data हमें lose कर देगा right so this is not the right way so what we need to do we need to add an empty column ताकि it will come and sit here जो already अछि ताको जंते रिमूव करने right so we'll come here again we'll go select everything And home option. text to columns delimiter what is our delimiter underscore and then next and then finish okay so what happened now your department and region has been splitted into two different columns right this is the department this is region right next now here you see some empty spaces are there
payment type re you have some empty spaces are there. For example, you have 3 or 4, so you can find and you can replace with some value not applicable ki kichi bhi you will put it. But we imagine you have, for example, 50,000 rows. Okay, entire table re there are so many empty spaces. Majhe majhe koti achi amuk jana nahi, but empty spaces achi. So we want to replace that empty space with not applicable. Enable replace kariyar achi. Okay. Then what we need to do, you select somewhere here, select the entire table, control A. Hala. Tapare go to home tab and here you go to find and select. Last option jota. Okay. Find and select, you have something called go to special. Let me show you again. Select the data, go to home tab, find and select. Okay. Find and select, we go to special. Here you see something called, I have an option called blanks. Okay. So when I select this blanks, select blanks and click on OK. This entire data array, jo blanks achi, everything will be selected. Okay. If you have 50,000 rows also, jette bhi blanks achi, everything will be selected here. See, this one is selected, this 3 is selected, right? Yes. Once it is selected, Yes. don't do anything. You just come to formula bar. Kichi escape kichi mario nahi. Jedi tame escape mario, the selection will be lost. Okay. So let me do it again. Control A, home, find and select, go to special, select the blanks, click on OK. So now what happened? All the blanks in that sheet in the data has been selected. Right. Now what we want to do, I want to replace this here by not applicable, NA. Formula bar re jayenge, I have mentioned with what I want to replace. You can put any number, you can put 0, you can put whatever you want. Okay. After placing that, what you need to do, you need to control and enter. Keyboard re, you need to select control and enter. Then what will happen? Everywhere, joti bhi amara blank thilla, everything will be replaced with the value which you have given. Control enter, only enter will not work. Okay. Let me do this again. Control A, home, find and select, go to special, blank, give the value which you want to do. Maybe control use karune. Control use now karke enter marchi. See, only one has been changed. Okay. So what you need to do? You need to control enter. So let me do this again. Go to special, blank. Okay. Give the value and then control and enter. Okay. So JOTP blank still, everything has been replaced with not applicable, NA. Okay. This is how handling the blank should be. Okay, so blanks has been handled. How to handle blanks? This is the way how to handle blanks, right? Next, revenue is fine, profit is fine, but profit margin. Okay, profit margin we are getting some errors. Okay, thank you, errors. Because there is a formula behind profit margin, I3 by H3. Right, I3 by H3 mane kono 8 divided by 8 hochi. But here we do not have a value. Mane numeric divided by text hochi. That's why we are getting error. So errors ko hame kemte handle kariya? Two ways we can do. Let me show you first one way. I will select everything. Okay, again same thing. Home, find and select, go to special. ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ମତେ କଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉ ବି କଲମରେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ସେଇ ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବି ଏରର୍ସ ଆସୁଛି okay when there is a formula applied and then you are getting error that one I want to find okay following or not
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Wherever there is a formula applied in the Excel, in that where I am getting errors. That is what I am finding here. Okay. And then click on OK. So कौन हबा wherever there is जेमती empty space को highlight करथिला एबे भी सेमती ही एटा highlight होची. Now here what I will do, I will give for example not applicable. Control enter. This is one way. The other way is एटी formula में जोटी apply करूचो सेठी ही I can give another formula. हमें कौन करेया if conditions हमें देखिछो कि so we have something called if error. Okay, let me do it again. Okay, एठी profit margin केमिति find out करचंदे I3 by H3 माने कौन 598 divided by 4500 is equal to 13.3%. But एठी कौन हैला 779 divided by NA. So obviously divided by NA करले we will not get the result. It is showing error. So what I am doing here, ये जो formula अच्छी तारी ऊपर है I am applying another formula. जेमते trim ऊपर हमें proper पकेटले. Similarly, on top of this formula, I am putting something called if error. Okay. अन्य कौन if this value I3 by H3 जेदी error आसुची, then comma what I want to show here. So text value, so I will put it inside quotations NA. तो कौन हबा जेदी I3 by H3 error आसीबो से error जगह it will replace with NA. If there is no error, then Yes. it will directly give the value. Yes, I3 sir. by H3 jota bhi आसियो, it will show that one. Right? Now enter. So what will happen? Joti direct value asuchi without error, it will take the value. Jeti error asigola, then it will bring the value which I am given here. This is the better way to handle errors. Following guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what we have done the cleaning of the data. Okay, you can do one more thing. For example, how many rows are here? 31 rows achi, right? Etere duplicates achi ki nahi, we don't know. Right? So what I can do, I can select everything and I can go to data. I have something called remove duplicates. Okay, we don't know duplicates achi ki nahi. When we have 50,000 rows and all, we will not be able to understand ki taa bhitar duplicates achi ki nahi, right? So, but if I come here, select the entire data, go to data and click on remove duplicates from all the columns, select all columns and click on OK. 3 duplicates were found. Okay, that means there were some duplicates, right? So when I click on OK, so that is gone now. So now if you see how many rows are here, 28 rows achi, 31 dekhotla, right? So jo tinta duplicate thila, that has been removed. Okay. So like this, once you create your data, Duplicate means all the rows and columns, they must all have. exactly same. Jedi for example, एठी जहाँ अच्छी ए पूरा values आउ गोटे row रे exactly same जदी अच्छी सेटा काट दो. सर हमें चेक करि परिबेनी को गुडा डुप्लीकेट रहला बोली डेटा रो manually check करिया पड़ियो. नहेले we can do one thing, maybe let's see. Sir, हाँ, hello. yes, tell me. Sir, जो 31 भाई तो मे कुछ first 31 date 31 May. Why not अच्छी May first not showing? What I mean, Ra? If you see this cell, okay,
31st May 2023, Kotso Wholesale Corporation. Okay. Contact number Punar Wise, Operations, Florida, Transfer, Erasobochi, right? If you see here, is it the same one? Cell number 14. Yeah. 14 and 21. Yeah. Exactly same, right? Similarly, row number 15 and row number 22. Yeah. Yeah. That is also exactly the same. Mane same means repeat ହେଇଛି, right? Similarly, Yeah. there will be one more. Okay, David, this one. May 30, David, something is there. Okay, 7th and last one. So these are the 3 duplicates which were already existing. So how to find out this one? When I talk about conditional formatting, I will tell you. Okay. That topic we will keep it. That will take little more time. So conditional formatting then I will tell you how to find the duplicate values, how to color code things and all. We will come to that one later. Okay, somebody was asking some question. May 31st कौन कहूथलो? ସୁଜି ସାର୍ हाँ. ମେ 31st କାଇଁ ଆସୁଛି କାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମେ ଆସୁନି? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ନା ସାର୍ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ସାର୍ ଲେଟ୍ ଜଏନିଂ କଲି ତ ଟିକେ ଅଫିସରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆମେ ଡେଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କ୍ଲିନ କରୁଛୁ ହେଲା ଆମେ ନୂଆ ଡେଟା କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରୁନୁ ଯଦି ମେ 30 ର ଡେଟା ଅଛି ମେ 1st ର ଡେଟା ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ we ଆଜ୍ଞା cannot do anything ଯୋଉ ଡେଟା ଅଛି ସେଇ ଡେଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ କରୁଛୁ we are not creating anything new Yeah. ଓକେ ସାର୍ okay यस सर सर right डुप्लीकेट डाटा जो ଆପଣ କଲେ ରିମୁଭ ଏଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସାର୍ ମାନେ ସର୍ଟକଟ duplicate ଟା find out କେମିତି କରିବା that I will tell later okay for that I need little time duplicate को କେମିତି ବାହାର କଲେ that I can show you now what I did I selected everything okay first let's see duplicate duplicate super first I did I selected all the data control A then I या went to home tab sorry not home या tab data tab okay या data tab re I have an option called remove duplicates या okay when I click on remove duplicates it will ask sabu column ru jedi same achi then only you need to remove so this all should be selected okay tamane kon exactly same row jedi auju goti jagar achi that we want to remove right या and then just click on OK. So 3 duplicates were found, 28 unique values remain. Okay, so जो तीनटा मु देखैतले से तीनटा जाको now gone. सर Okay, हमें किस हेलो कौन कहला? सर हम किस केस में हमें ये डाटा को ये करना है जो सेम डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है सर एक ही दिन में भी एक ही डेट पे भी सेम डाटा हमें 2 बार मिलेगा यानी कि वो हम किस केस में हमें उसको रिमूव करना है और किस केस में उसको रखना है सर नहीं एक ही टाइम में सेम डेटा 2 बार नहीं आ सकता है नो चांस सेम एग्जैक्टली सेम एवरीथिंग फॉर एग्जांपल आपने 12:01 PM पे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा ओके 200 रुपीज देके एक प्रोडक्ट खरीदा कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल 1001 है एग्जैक्टली सेम टाइम में नहीं होगा एटलीस्ट इट शुड बी 12:02 बाकी सब सेम हो सकता है बट देर विल बी स्लाइट डिफरेंस सेम टाइम एग्जैक्ट टाइम में 2 चीजें कैसे होंगे ओके राइट ओके अगर आप Sir, डेट I भी have a लेते हो question. हाँ Hello. जो एटलीस्ट देर शुड बी या टेल मी Sir, actually, if the name columns like Vivek Gupta, then how can you distinguish the duplicacy? क्या हुआ नहीं समझा Sir, how can we distinguish duplicacy in the Excel, provided that uh, the 9 or the 10 numbers? Hello. क्वेश्चन क्लियर नहीं मैं जितना समझा मैं आई विल ट्राइंग टू टेल यू आर टेलिंग सेम नेम इज देयर ट्वाइस Hello. आई कैन हियर यू कैन यू हियर मी
See, if I understood the question, अगर same name दो बार है, okay, this guy has purchased something called some product one. This guy has purchased some product called product two. तो ये duplicate बोलेंगे या नहीं? इसको क्या बोल देंगे? Is it duplicate? No, this is No. not a duplicate entry. Okay, this is a different guy. This is a different guy. ओके जनरली क्या होता है हमारा डेटा मॉडल या फिर जो डेटा एनालिसिस करते हैं उनका मतलब नेम लेके नहीं करते हैं, उनका आईडी होता है. नेम कैन बी डुप्लीकेटेड, सेम नेम कैन, मल्टीपल पीपल कैन हैव सेम नेम, बट मल्टीपल पीपल विल नॉट हैव द सेम आईडी. कस्टमर आईडी हमेशा अलग होता है. ओके जैसे एम्प्लॉइज है, एक कंपनी में सेम एम्प्लॉय नेम मल्टीपल पीपल विल बी देयर, बट एम्प्लॉय आईडी विल नेवर बी द सेम. ओके आइडेंटिफिकेशन नंबर एक अलग सा जनरेट होता है. ओके सर हेलो, या सेम बंदा भी रहेगा तो उसका आईडी दूसरे से डिफरेंट होगा, तो हाँ आईडी, दैट इज तो आईडी मेन फैक्ट होता है. जी करेक्ट. सर, जी सर. Right. Okay, so once you have this data, now I will just do a little analysis, but I am not teaching you. Okay, कैसे analysis करते हैं वो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बस I am trying to show you कि एक whole process आपका हो जाएगा, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ. Okay, if you don't understand, nothing there. पहले हमारा डेटा ऐसा था. Okay, very dirty data we had. We have converted this into a cleaned data. Right? उसके बाद जनरली क्या करते हैं, ये अभी एनालिसिस करने के लिए रेडी है. So generally what I will do, I will select somewhere, go to insert, go to pivot table, एक नया sheet में चाहिए, click on OK. Now what I want to analyze, for example I want to analyze each department wise profit कितना generate हो रहा है. So this is different departments and this is the profit generated. Similarly if I want to analyze हर एक region से कितना revenue या profit generate हो, revenue generate हो रहा है. So what I will do, instead of department I will take the region, instead of profit I will take the revenue. So हर एक region से ये count नहीं करना है, इसको sum करना है. So हर एक region से मेरा revenue कितना generate हो रहा है. Right? Similarly anything I can do it from here. So maybe based Sir, on region and department. एक second. Based on region and also department. So मेरा हर एक डिपार्टमेंट से हर एक रीजन, बिग डेटा कैलिफोर्निया से इतना आ रहा है, ऑपरेशंस फ्लोरिडा से इतना आ रहा है. ओके सो आई नाउ आफ्टर डेटा गॉट क्लीन्ड आई कैन इजीली डू द एनालिसिस. ओके इसको हम लोग if we want we can put it in the form of a chart also. All these things I will come back later. Okay just I am trying to show you overall picture. ठीक है I can do something like this. मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में ऑल्सो आई कैन डू दिस. तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले डेटा शुड बी क्लीन्ड. राइट ओके या टेल मी सम क्वेश्चन समबडी इज आस्किंग. और एक बार ये थोड़ा बताओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. विच वन? ईच वन, ये वाला सभी मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा मैं समझ नहीं पाया. नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट? ये जो हमने ये जो एनालिसिस किए वो वाला पूछ रहे हैं आप? हाँ, एनालिसिस जो हुआ है. हाँ नहीं ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, आई जस्ट मतलब एक एग्जांपल दिखाया हूँ. हमारे पास अच्छा जब डेटा रॉ डेटा में है उसको हम जी. जब एनालाइज करने की करने की कोशिश करेंगे तो ये करने से अच्छा. पहले हमको डेटा को क्लीन करना पड़ेगा. ओ, तो मैं बस आपको क्लीनिंग ही सिखाया, एनालिसिस आई एम नॉट गोइंग टू दैट वन नाउ, दैट विल या कम मच लेटर. या जस्ट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट दिखाने के लिए आई जस्ट शोड यू कि कैसा होगा फाइनली. या ओके हाउ टू डू या दैट एनालिसिस. पिवट टेबल मतलब क्या है, इसमें रोज में क्या, क्यों रोज में डालना है, क्यों कॉलम्स में नहीं डालना है, कॉलम्स में कब डालना है, इसको फैक्ट या बोलते हैं, इसको डायमेंशन बोलते हैं, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है. दैट आई विल या कम टू दैट लेटर. या ओके या नाउ today's agenda was to show you how to do the cleaning. या ठीक है या so I will
गिव यू दिस शीट, ओके, रॉ डेटा मैं आपको दूंगा, यू नीड टू डू द सेम थिंग, ओके। उसके बाद आई विल गिव यू अनदर शीट, ओके, एक और शीट है, दिस ऑल्सो डजेंट हैव क्लीन इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे +11 है, ये सब नहीं आना है, यहाँ पे ऑर्डर डेट प्रॉपरली आना है, डेट आना है, और ये जो एड्रेस है दिस शुड कम इन ए सिंगल लाइन, ओके। ये बीच में एम्प्टी सेल्स है, रिमूव दिस थिंग्स, पूरा खाली है, नो यूज, राइट, तो इसको हटाना है, ओके। यहाँ पे जैसे नाम, यहाँ पे इट इज इन लोअर केस, इट इज इन अपर केस, दिस इज इन प्रॉपर केस, एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर केस, ओके। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एम्प्टीज अगर है, यू नीड टू हैंडल द एम्प्टीज, अगर एरर्स है दैट यू नीड टू हैंडल द एरर्स, जैसे मैंने दिखाया था, ओके। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू हियर इज, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, राइट, तो एम्प्टी शुड बी, अगर यहाँ पे एम्प्टी है, ये नॉर्थ लेना चाहिए, मतलब ऊपर का वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। इफ दिस इज एम्प्टी, दिस शुड टेक द एबो वैल्यू, अगर ये एम्प्टी है इसका एबो लेना है, मतलब क्या है, ये नॉर्थ हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नॉर्थ होना चाहिए, ओके। ये वाला वेस्ट होना चाहिए, ये वाला, ये तो एम्प्टी छोड़ो, ओके। जहां पे भी एम्प्टी है उसका ऊपर का वैल्यू लेना है, सर ऐसा क्यों? दैट इज माई रिक्वायरमेंट, ऐसा क्यों मतलब, मैं सर क्लाइंट हूं, मैं आपको रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, सर आई अंडरस्टैंड। ओके, आप मेरे डेवलपर हो, मैं आपको रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, मैं ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, यू कैनॉट आस्क मी ऐसा क्यों, ओके ओके। ठीक है, आई एम पेइंग यू, राइट, सो यू नीड टू डू वट एवर आई एम Yes. आस्किंग टू डू, अरे मैं जान नहीं पाया कि क्या मतलब रिक्वायरमेंट है बोल के। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ, तो मेरा ओके रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये सब हैंडल करोगे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, अगर मेरा सेल एम्प्टी है, अगर पूरा एम्प्टी है आप उसको हटा दो, नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट वन, अगर वैल्यूज है और बीच में कहीं पे वैल्यू नहीं है, दैट शुड टेक द एबो वैल्यू, ठीक है। इसके लिए यू नीड टू डू लिटिल रिसर्च, ओके, वी हैव लर्नड बट नॉट इन ए प्रॉपर वे, मतलब एग्जैक्टली इसको कैसे करना है मैंने नहीं बताया, ओके। आपको थोड़ा रिसर्च करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट, रियल टाइम में ऐसे ही होगा, डोंट एक्सपेक्ट दैट जो भी हमने सीखा है एग्जैक्टली वही आएगा, हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, ओके। एंड वी शुड बी इन ए पोजिशन टू फाइंड आउट उसको हमको कैसे रिजॉल्व करना है, ओके। ओके। Yes, sir. आई एम वर्किंग इन पावर बीआई फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years, टिल नाउ हर हफ्ता कुछ नया आता है जिसको मुझे रिसर्च करके फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 3-4 दिन लगता है, जस्ट टू फाइंड आउट हाउ टू फिक्स दैट वन, ओके that will happen eventually, it will happen, but you should have the capability कि हमें कहाँ पे ढूंढना है, गूगल में करना है, यूट्यूब में करना है, चैट जीपीटी यूज करना है, ओके। इफ यू अंडरस्टैंड दैट वन, आप कोई भी टूल आसानी से सीख सकते हो, ओके, Yeah. राइट, Okay, sir. राइट। सो वॉट एवर असाइनमेंट्स आई एम गोइंग टू गिव इन, मतलब फ्यूचर में एक्सेल हो, पावर बीआई हो, जो भी हो, देयर विल बी 1 or 2 components which you need to do by your own, Okay, sir. okay, ओके। राइट। सो बिफोर वी क्लोज, जस्ट टेल मी हमने क्या क्या यूज किया है आज क्लीनिंग के लिए। पहले हमने फॉर्मेट टू टेबल, जो डेटा था उसको टेबल में फॉर्मेट किया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, ऑटो फिट टू हाइट, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और पेज ट्रिम कौन सा? फॉर्मेट, पेज Data. फॉर्मेट चेंज किया, राइट। उसके बाद ट्रिम किया, उसके बाद Upper. Remove blank प्रॉपर यूज किया, spaces. हाँ, स्टेप बाय स्टेप लेट्स गो। पहले ट्रिम किया, उसके बाद प्रॉपर किया, उसके बाद पेस्ट वैल्यूज हमने देखा, ओके, ओनली वैल्यूज को कैसे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट Yeah. व्हाट एल्स वी, टेक्स्ट टू कॉलम्स, राइट, यस सर। स्प्लिट किया, राइट, कॉलम को स्प्लिट किया ना दोनों में, और Yeah. क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट लास्ट को किया, हाँ। इफ एरर भी है, उससे पहले
हैंडलिंग ब्लैंक वैल्यूज, ब्लैंक सेल्स, राइट। जहां पे ब्लैंक्स थे उसको हमने एन से रिप्लेस किया, राइट। उसके बाद Yes, sir. If error. हैंडलिंग एरर बाय यूजिंग इफ एरर, राइट। Yeah. उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स। और कुछ किए क्या? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। बस उतना ही, राइट। यस सर। यहाँ पे रिप्लेस किए थे ना हमने, फाइंड रिप्लेस किए थे ना, जो ब्रैकेट में था उसको हटाए थे ना। Yes, sir. यस सर। फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड में हमने क्या किया था, ब्रैकेट के अंदर एस्टेरिस्क डाला था, राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और भी मतलब डिपेंड डेटा वी विल बी चेंजिंग। मुझे बस एक प्रोसेस दिखाना था हमको कैसे करना है, कॉलम बाय कॉलम हमको जाना है। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग एट ए स्ट्रेच। ओके, पहले कॉलम देखेंगे इसमें क्या क्या क्लीन करना है, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट कॉलम। दिस रिमेन सेम अक्रॉस ऑल टेक्नोलॉजीज। आप सीक्वल पे भी काम करोगे, कॉलम बाय कॉलम ही क्लीन करना है। पावर वे में करोगे, कॉलम बाय कॉलम ही करना है। ओके, ऑलवेज यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीथिंग एट वंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लीन करते जाना है। वंस इट इज क्लीन देन यू विल डू द एनालिसिस पार्ट। ओके, Okay. Yes, एनी sir. क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? बेटा, आई हैव वन डाउट सर। हाँ। मैंने ये पूछ रहा था सर, जब क्लाइंट को ज़रूरत होता है कुछ या डैशबोर्ड के लिए, तो उन्होंने क्या बताते हैं कि हाँ मेरे को एक्सेल में चाहिए या पावर बी में चाहिए या सीक्वल में चाहिए, ऐसे कुछ बताते हैं या फिर हमारा कंपनी को वाइज हम करके देते हैं? नहीं, इट डिपेंड्स वो क्या का। फॉर एग्जांपल मैं एक ड्राइवर पोजीशन के लिए गया, किसी के पास ड्राइवर पोजीशन था, मुझे सब कार चलाना आता है, थोड़ी ना मैं बोलूंगा मुझे जो कंफर्ट है, उसके पास जो कार है उसको ही मुझे ड्राइव करना है, राइट। यहाँ पे भी वो कंपनी, वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको एक्सेल पे काम करना है। वो लोग पावर बी यूज कर रहे हैं तो आपको पावर बी पे काम करना है। ठीक है, यस इट सर। डिपेंड्स ऑन देम व्हाट दे आर यूजिंग। जनरली very huge data where databases everything is coming into picture, it will be Power BI only. Excel will not be able to handle that much of data. गॉट Okay, प्रोजेक्ट करने से पहले छोटे मोटे पीओसी बोलते हैं। व्हाट इज पीओसी? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब ये वाला प्रोजेक्ट हम कर भी पाएंगे या नहीं, उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। उस टाइम में मे बी दे विल यूज एक्सेल। पहले एक्सेल में बनाएंगे ऐसे जैसे हमने बनाया था, दे विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ही बना रहे हो, पहले आप ये बना के दिखाओगे कि डेटा ऐसा आ रहा है, वी विल शो द रिपोर्ट इन दिस वे। उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है ये ठीक ठाक है, हम लोग अप्रूवल ले लिए मैनेजमेंट से, वी विल गो विद दिस रिपोर्ट। देन द सेम थिंग यू नीड टू डू इट इन पावर बे। जब पावर बे में आप काम करोगे, इट विल नॉट बी लाइक 31 रोज, इट विल बी 31 मिलियन रोज। ओके। ओके, सो तब आपका नंबर ये सब चेंज होंगे, ये सब मिलियंस में आएंगे। ओके, वो सब आप एक्सेल में नहीं कर पाओगे, एक्सेल स्टक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, राइट। गॉट फॉलोइंग और इट। नॉट? तो इट या ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे प्रोजेक्ट में कर रहे हो। आप छोटे मोटे, छोटा प्रोजेक्ट, छोटा नहीं, एक्सेल में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक्सेल में नहीं होते हैं, एक्सेल में भी अच्छे खासे प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उनको किस में चाहिए। if you got hired as an Excel data analyst, most of the times you will be working with Excel only. If you got hired as a Power BI developer, you will be working on Power BI. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए, किस रोल के लिए लिया गया है। Okay. ओके, यस सर। राइट। Yeah. नाउ यू आर आस्किंग हाउ टू डू द फॉर्मेट टेबल, राइट? सो okay, so select everything, go to home, format as table. How to remove this?
Okay, it is already formatted. For example, it is not in formatted one. Let me do this. Movie, move to end. Okay. Create a copy, move to end. Okay. So select everything. Okay. Select everything. Go to home, format as table, and select any design you want. Okay. So this will be converted into a table. Okay. Still the middle is table. You can first convert into a table and then you do the operations. It is just data entry, no? They have entered here in an Excel sheet and they are providing it to you. In Power BI also. No, Power BI, it doesn't matter ki kemite asuchi. If it is in direct entry hi asuchi ki table format rasi, it doesn't matter. It will pull the table it will pull the data in the form of a table only. हमें जो Power BI को Excel data आने बा, it can be in table format, it can be in the raw format. एमिति format रहिले भी किसी problem नहीं Power BI पाइंगा. It will take it in the form of a table only. एठी हमें काहे की table भलिया convert करथिले जेमते मु देखैले if I want to apply a formula, if it is not in table format, for example मु एठी if error apply करछि. Okay, this one, if it is error, I want to see it as NA. एटी कौन हैला खाली गोटे सेल रे ही अप्लाई हैला, right? And what I need to do, I need to apply this one to the entire cells to get it applied. But if I convert this into a table, for example, here I will apply if error. Okay, ମୁଁ गोटे सेल रे apply करछि, but it is getting applied to the entire rows. Okay, there are some extra features when you convert into a table. जदि मझिरे मु गोटे कोन नुवा सेल add नुवा row add करूछि. Okay, so table सेटा को भी नबो माने extra cells को भी it will be considered as a table. But if you are not converting into a table, तमरो जो control A करके माने when you are selecting this one, no, the last row will be skipped. माने हमरो जो range दिया है, for example I3 रू J33 दिया है जी, ता मझिरे तमे आ गोटे रो को ऐड करछो, तो सेटा 34 हे जिवो, से 34 टा सेटा कंसीडर करियो नै. कहीं आगुर हमें रेंज दे तो 33 ना, जदि टेबल रे कन्वर्ट करछो सेटा को भी नबो. Okay. Okay, then any questions before we close for today? Is this helpful? हेलो Yeah, tell me. सर, हम कैसे क्लीन करेंगे इसका असाइनमेंट, थोड़ा कैसे आपसे एक्सेस करेंगे? कौन सा नहीं समझा? मैं क्या बोल रहा था, जो आपका रो डाटा को क्लीन करें ना, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं अभी बताया ना, आई विल सेंड यू दी शीट्स. आपको रॉ डेटा का शीट्स मैं भेजूंगा. व्हाट्सएप पर भेजेंगे क्या? हाँ. अच्छा ठीक. ओके, आई विल शेयर यू द शीट्स. एक शीट जो हमने अभी बनाया है, द सेम थिंग यू नीड टू डू इट. एक और नया शीट दूंगा जो आपको खुद से करना है. मैं कैसे एक्सेस करूंगा एक्सेल में? क्या हुआ? मैं कैसे एक्सेस करूंगा? मैं आपको भेजता हूँ ना, व्हाट्सएप में भेजूंगा, आप डाउनलोड करके आप करोगे. ठीक है. ठीक है. Yeah, sir, thank you. हेलो या सर, गोटे प्रीवियस क्लास रे गोटे जाइतला असाइनमेंट प्रैक्टिस पाई, से गोटे बुझा पड़ नथला. एटा आपण कहबे ना से सर कहबे? कौन थिला मो असाइनमेंट मु जान नहीं, मु देखे आपण कि असाइनमेंट सर ओके सर प्रीवियस क्लास ଦେଇଥିଲେ सर. हाँ सर आसीबे मझिरे सर नेबे क्लासेस तो बुझे देबे तुमको. मु कहि दोछि सर. ओके ओके सर. ओके, हो ठीक अछि. आई एम क्लोजिंग फॉर टुडे एंड वी विल सी अगेन. ओके, या थैंक यू. थैंक यू. Yeah, share the raw data. So yeah, I will share you the raw data.